Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q3 and 9 months FY22 earnings conference call of Kamdhenu Limited. This conference may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectation of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Satish Agarwal, Chairman and Managing Director of Kamdhenu Limited. Thank you, and over to you, Mr. Agarwal. Thank you, ma'am. Good afternoon, and a very warm welcome to everyone present on this call. Along with me, I have Mr. Harish Agarwal, Chief Financial Officer and Strategic Growth Advisor, our Investor Relation Advisor. Before we proceed ahead, I hope all of you and your loved ones are safe and keeping well. We have uploaded our results and investor presentation for the quarter on the stock exchanges and company's website. Hope each one of you had a chance to go through the same. With revival in economic activities post the second wave of COVID-19 and India's large vaccination drive, which progressed well in vaccinating large number of people, we have led to stable business environment and positive consumer sentiments. Our company has continued to maintain momentum in our business in the quarter gone by. The ongoing third wave of COVID in India has so far been less stringent than the previous waves. We are well prepared for the learnings of our previous experience to tackle the current situation. We have not witnessed any material impact on our business. Q3 FY22 was a steady quarter for the company. On overall level, our company has achieved top-line growth of 24% and PAT growth of 7% in Q3 22. I will talk in more details with regard to steel and paint business performances separately. Now, first coming to paint business, I would like to highlight on the performance during the quarter and 9 months. The company has achieved revenue growth of 25% on year-on-year basis in Q3 and 29% year-on-year in 9-month FY22. This is on the back of full-fledged operations at our paint factory at Chapanji, Rajasthan from October 21 onwards. It has state-of-the-art facilities and upgraded manufacturing facilities with new machinery. With the outset of full-fledged operations, we expect significant uptick in our business trajectory in the quarters going ahead. Demand for our paint products have remained strong, driven by festive season and prolonged wedding season in India. Consumers are more inclined towards home improvement and making their spaces look better, which has led to increased demand. Over past few quarters, paint companies are facing inflammatory trend in the prices of raw material, and this challenge has continued in Q3 also. The company took price hike of 10 to 11% during Q3 FY22. There has been some softness in raw material prices in the current quarter, and we expect it to stabilize soon. Demand for decorative paints has been witnessing strong traction over the past few quarters, and we expect this momentum to continue on back of shortening of repainting cycle, housing demand, and consumer preference to build pakka houses. Our company is focused
on increasing its share of the premium and environmental friendly products and introducing new variants in the market for the coming masses to meet the varied consumers' requirements. I would like to update on the insurance claim towards building plant and machinery is under finalization stage, and the claim amount is expected to be received within this financial year. Now coming to the scheme of arrangement, the Honorable NCLT has accepted the second motion application done by the company on 16 December 21, and now they have fixed 22nd March 22 for the consideration of final approval of the scheme of arrangement. In order to expedite and accommodate the issuance of shares with regard to the scheme of arrangement for demerger of the paint business, in a proactive move, the Board of Directors has approved increase in authorized share capital of company from 30 crore to 41.5 crore, divided into 3 crore equity shares of 10 rupees each, ranking pari passu in all respects with the existing equity shares of the company, and 1 crore 50 lakh, that is 1.15 crore preferential shares of rupees 10 each, subject to the approval of shareholders of the company. Now, I would move on to give key updates on the steel business. We have clocked a revenue growth of 23% on year-on-year basis to rupees 149 crore in Q3 FY22 and 55% year-on-year growth in 9 months FY22. During the quarter gone by, our company has faced challenges due to external issues of pollution at Delhi and NCR region. TMT manufacturing plant at Bhiwadi was under partial operations or shut down for 27 days due to ban imposed by NGT in Delhi and NCR region. Moreover, construction activities in Delhi and NCR region were also banned for 35 days by the Honorable Supreme Court. Also, few of our franchisee plants are located at NCR region. Therefore, production was partially hampered at these plants due to ban imposed by the National Green Tribunal. Further, unprecedented monsoon, festival holidays, and slowdown in construction activities further impacted the overall demand for franchisee sales in Q3. Operations now are back to normal levels at our own manufacturing plants and franchisee units, and we expect good demand momentum ahead. Our company plans to enhance its market share of TMT bars and increase the production capacity of its brand Kamdhenu Next through franchisee route. As mentioned in the last quarter, we are expanding the production capacity of franchisee units in the state of Telangana, and it is progressing well. This is in line with our vision to reach capacity of 50 lakh metric tons in next 2 years. We are confident of achieving high franchisee sales on back of a strong product quality and superior strength and large distribution network to reach remotest areas. With recent government budget outlay towards affordable housing, we expect it will boost the demand for construction material. Also, government push towards infrastructure development and metro and rail projects will further propel demand for steel products. To conclude, we expect the demand momentum to continue with business activities getting back to normal level. At Kamdhenu, we strongly believe in enhancing shareholders' value and strive to achieve the same through continuous evolution and upgradation of our efficiencies. We are also looking to penetrate further into markets where our presence is less and strengthen our footprints in existing geographies. With our strong brand and large distribution network and huge product portfolio in both paint and steel business,
we are well placed to grow faster in the coming decades and provide value-added products for the common masses. Now, I would like to hand over the line to Mr. Harish Agarwal to update on the financial performance of the company. Thank you. Thank you, sir. I will take you all through the standalone financials for Q3 and 9 months FY22. First, about the paid business. Total sales from paid business for Q3 FY22 stood at rupees 77.5 crore as compared to rupees 62.2 crore in Q3 FY21, growth of 25% year-on-year, and stood at rupees 62.9 crore for Q2 FY22, a growth of 23% quarter-on-quarter basis. We expect growth trajectory in our paid business on account of rise in real estate buying, revival in housing demand, changed consumer behavior with focus on enhancing and beautifying their personal space and homes. We have reported positive EBIT not adjusted for unallocable expenses of rupees 4.3 crore in Q3 FY22. Paint segment contributed 34.2% of revenue in Q3 FY22. Our overall volume from on manufacturing and outsourcing stood at 9,141 KL for Q3 FY22 as compared to 8,701 KL for Q3 FY21, year-on-year growth of 5%, and stood at 8,351 KL in Q2 FY22, a growth of 10% quarter-on-quarter basis. To quickly summarize 9-month numbers, for 9-month FY22, total sales stood at rupees 173.5 crore as compared to 134.8 crore in 9-month FY21, an increase of 29% year-on-year basis. For 9-month FY22, we have been achieved positive EBIT of rupees 5.8 crores. For 9-month FY22, our volume stood at 22,584 KL as compared to 20,739 KL in 9-month FY21, a growth of 9% year-on-year basis. Now coming to steel business, our steel volume, including franchisee route, have stood at 6.33 lakh metric ton in Q3 FY22 as compared to 6.57 lakh metric ton in Q3 FY21 and 6.27 lakh metric ton in Q2 FY22. Total brand turnover for Q3 FY22 stood rupees 3,973 crore as compared to 3,353 crore in Q3 FY21, year-on-year growth of 19%, and stood at 3,792 crore in Q2 FY22, a growth of 5% quarter-on-quarter basis. Royalty income through franchisee stood at rupees 23.2 crore in Q3 FY22 as compared to 23.5 crore in Q3 FY21 and stood at 22.5 crore in Q2 FY22, a growth of 3% quarter-on-quarter. Revenue from own manufacturing was up by 17% year-on-year to 113.8 crore in Q3 FY22 as compared to 97.3 crore in Q3 FY21 and stood at rupees 125.5 crore in Q2 FY22. Now quickly summarize the 9-month numbers. For 9-month FY22, our volume including franchisee route stand at 18.4 lakh metric ton as compared to 16.6 lakh metric ton for 9-month FY21, a growth of 11% year-on-year basis. Total branded turnover for 9-month FY22 stood at around 11,250 crore as compared to 7,970 crore for 9-month FY21, a growth of 41% year-on-year basis. Royalty income through franchisee for 9-month FY22 stood at rupees 67.3 crore as compared to 58.7 crore in 9-month FY21, a growth of 15% year-on-year basis.
Revenue from on manufacturing for 9 months FY22 stood at 327.3 crore as compared to 207.9 crore in 9 months FY21, a growth of 57% year-on-year basis. For the overall business, revenue for Q3 FY22 stood at rupees 226.5 crore as compared to 183.4 crore in Q3 FY21, a year-on-year growth of 24%, and stood at 215.5 crore in Q2 FY22, quarter-on-quarter growth of 5%. Our EBITDA was up by 6% year-on-year to 14.5 crore in Q3 FY22 as compared to 13.7 crore in Q3 FY21 and stood at 14 crore in Q2 FY22, a growth of 3% quarter-on-quarter. Our EBITDA margin for the quarter stood at 6.4%. Profit after tax stood at rupees 7.7 crore for Q3 FY22 as against 7.2 crore in Q3 FY21, a growth of 7% year-on-year, and stood at 7.7 crore in Q2 FY22. Let me quickly summarize the 9-month numbers for the overall business. For 9 months FY22, our revenue stood at rupees 587.9 crore as compared to 402.9 crore in 9 months FY21, a growth of 46% year-on-year basis. For 9 months FY22, EBITDA stood at rupees 40 crore as compared to 29.3 crore in 9 months FY21, a growth of 37% year-on-year basis. For 9 months FY22, profit after tax stood at 20.9 crore as against 11.1 crore for 9 months FY21, a growth of 88% year-on-year basis. With this, I would like to open the floor for question and answer. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question-answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Isha Savla from RS Securities. Please go ahead. Hello, sir. Good afternoon. Thank you for the opportunity. So, what are your current utilization levels at both our plants? What was the utilization in current quarter and the quarter gone by? Have you faced any impact from the third wave of COVID? Yeah, we have little bit impact of the COVID in the Q3, and there are some impact in the Q4 also, as January was the peak for this COVID, and the average utilization of our plant is around 75% of the steel and around 60% of the paint. Okay, sir. And so, have you introduced any new products in paint and steel business over last few months? No, it's a continuous process. In the steel, we used to introduce our new product over a period of after 2-3 years. And in the paint business, it is a regular feature for developing the product. But in the last 3 months, we have not introduced any new product. Okay, sir. So, can you throw some light on your capex plans in both of this business? Right now, we don't have any capex plan for the steel and paint. In the steel business, we have the franchisee business model where we are expanding our capacity from 38 lakh metric ton to 50 lakh metric ton through the franchisee route, where investment is made by the franchisee units. We don't make any investment in the steel business. In the paint business, our existing facility is sufficient to achieve the sales turnover of around 450 crore. So, after achieving or by reaching nearby, we will plan for the next plant. Okay, sir. Thank you. That was helpful.
Thank you. The next question is from the line of Sumit Kumar from Apex Investment. Before that, I would like to remind all participants, if you have a question, please press star then 1. Over to you, Mr. Kumar. Yeah, hello, sir. Thanks for the opportunity. Sir, I have a couple of questions on the paint business. So can you share, what is your view on current, increasing competitive intensity in paints industry and, entry of players like Grasim and JSW Paint? देखिए, आपका बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है आज की डेट में, और अभी पेंट में जिस तरह से डिमांड आ रही है और पेंट का बिजनेस ऑलमोस्ट 15 to 18% एनुअल ग्रोथ है, और आपने ये भी देखा होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पूरा बिजनेस धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर को शिफ्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत है। और अभी जैसे आपने बजट में भी देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए करीब 48,000 रुपये का फंड्स एज ए सपोर्ट के लिए उन्होंने एलोकेट किया है, और 80 लाख हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग का टारगेट 1922 में 22 फाइनेंशियल ईयर में अभी रखा है। तो उसमें अगर हम ये देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ की एडिशनल डिमांड पेंट के सेगमेंट में इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और चूंकि ये पूरा स्प्रेड है पूरे कंट्री में, तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी होगी हम इसमें से भी कुछ शेयर अपना लेंगे। और जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कंपनी को ऑलमोस्ट 35 to 40% की एनुअल ग्रोथ चाहिए, तो हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर 450 करोड़ का बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ की रिक्वायरमेंट हमारे को मार्केटिंग सेल्स बढ़ाने की है, और वो हमें लगता है कि हम उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, डीलर बेस बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा जो एरिया है थोड़ा सा नए एरिया में भी हम लोग अपने डिपो खोल रहे हैं। अभी हमारे पास लिमिटेशन है कि नॉर्थ में हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, पूरे इंडिया में नहीं है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं लिमिटेशन है ड्यू टू फ्रेट डिसएडवांटेज के लिए। लेकिन फिर भी जैसे जैसे टाइम आएगा, टाइम होगा, तो नई अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है सामने प्रोडक्शन कैपेसिटी की, उससे भी काम करेंगे, और प्रोडक्शन आई थिंक जो टारगेट्स हैं वो इजीली अचीवेबल हैं, और उसके लिए कंपनी और हमारी टीम जो है बहुत तेजी से काम कर रही है। ये पेंट बिजनेस एक रिटेल का बिजनेस है, हमारा रिटेल के अंदर एक्सपर्टाइज है। जैसे आपने कहा JSW आ रहे हैं या और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो अपना सबका मार्केट शेयर रहता है, लेकिन ये रिटेल बिजनेस है। और हम लोग स्टील में भी जो काम करते हैं, हमारा 90% के करीब रिटेल सेल है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि इस बार हमारा 9 मंथ का 11,250 करोड़ का हमने 9 मंथ के अंदर बिजनेस किया है। 11,250 करोड़ का हमने बिजनेस किया है इस बार। तो इसमें 90% रिटेल सेगमेंट में किया है, और पेंट में भी रिटेल का बिजनेस है। तो हमें लगता है कि रिटेल के बिजनेस में हम लोग का जो एक्सपर्टाइज स्टील में है उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो बड़े और प्लेयर्स जो आ रहे हैं, शायद उनके पास में प्रोजेक्ट की सेल है, इंस्टीट्यूशनल सेल है, गवर्नमेंट सेल है, रिटेल नेटवर्क अभी उनके पास इतना बड़ा नहीं है। Right. Understood. And sir, my next question is on raw material prices and all. We understand that all paint companies are increasing. They are seeing inflationary trend in raw material prices over the last few quarters. So can you share by what percentage has raw material prices increased on quarter-on-quarter or YOY basis, and what is the quantum of price increase we have taken? In Q3 FY22? देखिए, Q3 में हम लोग सभी पेंट कंपनीज में, एक तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट सभी पेंट कंपनीज की जो प्राइस लिस्ट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। तो जैसा भी प्राइस इंक्रीज एशियन या बाकी और कंपनीज ने किया है, कामधेनु ने भी वही 10 से 11% का प्राइस इंक्रीज पिछले Q3 में लिया है, लेकिन वो दो स्ट्रेच में लिया है, और उसको एडजस्ट होने में या एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा सा समय लगता है।
तो जो 10 से 11% का प्राइस इंक्रीज Q3 में आया था, उसका हार्डली 20% इफेक्ट Q3 में आया है, बाकी इफेक्ट इसका Q4 में आएगा। इसके अलावा जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट अगेन 1-2% का प्राइस इंक्रीज हमारे रॉ मटेरियल में आ रहा है, और होपफुली फरवरी के महीने में फिर एक प्राइस इंक्रीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो प्राइस इंक्रीज मार्केट में तभी एक्सेप्ट होता है जब तक एशियन इसमें लीड लेके नहीं डिक्लेयर करते हैं। तो बाकी कंपनीज भी उसको फॉलो करती हैं, सेम लेवल पे करती हैं, सेम परसेंटेज करती हैं। तो ऑलमोस्ट जो प्राइस इंक्रीज पिछला हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल की थी, वो ऑलमोस्ट उसमें से 90% पास ऑन हो चुकी है। लेकिन अभी जो फिर फ्रेश थोड़ा सा क्रूड की वजह से जो प्राइसेस बढ़ी हैं, वो उसके लिए फिर एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से अर्लीस्ट इसको जो है कंज्यूमर तक पास ऑन कर पाएं। Understood. Okay, sir. Thank you. That's it from my side. Thank you. Before we take the next question, a reminder to the participants. If you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Priyanka Singh from Atidan Securities. Please go ahead. Yeah, hi. So firstly, your current your company has 1,600 plus tinting machines installed at dealer outlets. So what is your view on the increase in usage of tinting machines? And like, are we planning to add any more tinting machines going ahead? देखिए, अगर सेल्स हमें बढ़ानी है, जिस तरह से मार्केट का सिनेरियो है, अभी मोर देन 2000 शेयर्स का टिंटिंग मशीन से अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर के लिए। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे शेयर स्टॉक में रखें, सब लिमिटेड 7, 8 या 10 शेयर मार्केट में जो रेगुलर चलते हैं वो ही स्टॉक में रहते हैं। और टिंटिंग मशीन का बड़ा रोल है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटराइज मशीन से, वो शेड हम उनको अर्लीस्ट प्रोवाइड करा पाएँ। तो टिंटिंग मशीन्स अगर हमें सेल्स बढ़ा रहे हैं, तो टिंटिंग मशीन्स के लिए भी प्लान है कि टिंटिंग मशीन आने वाले टाइम में हम लोग इसको 1600 मशीन्स में करीब हम ग्रेजुअली हर महीने हर साल इसको बढ़ा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मशीन जैसे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डीलर। और अभी इसमें कोई बहुत बड़ा कैपेक्स का प्लान नहीं है। ये जरूर है कि जैसे पहले हमने एक कंपनी का आउटलुक दिया था कि कंपनी अगले 4-5 साल में 1000 करोड़ का बिजनेस करना चाहती है, तो उसके लिए डीमर्जर के बाद हम इसमें एक बार वापस रीथिंकिंग करके रीवर्किंग करेंगे। और उसमें अगर प्लांट की ज़रूरत है या टिंटिंग मशीन में ज़रूरत है या और किसी तरह की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, तो वो फंडिंग हम बैंक से या किसी और तरीके से चाहिए जो होगी वो करेंगे। और ये जरूर है कि टिंटिंग मशीन कंटिन्यूसली ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये हर महीने हर साल बढ़ती रहती है लगातार जैसी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो हम प्रोडक्ट है हमारा 90% प्रोडक्ट हमारा वाटर बेस है, स्पेशली जो प्रीमियम इमल्शंस है उस सेगमेंट में हमारी अपनी प्रेजेंस है। तो प्रीमियम इमल्शंस तो हमेशा टिंटिंग मशीन के थ्रू ही शेड बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे एक और शेयर करना चाहूँगा कि कामधेनु ने पहली बार एक QR कोड का सिस्टम डेवलप किया है कि आप QR कोड फोन पे स्कैन करके और आप पूरा का पूरा शेड कार्ड अपने उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा बेनिफिट हर कंज्यूमर को, हर डीलर को या हमारे सब पेंटर्स को हो रहा है। तो उसका भी बेनिफिट तभी है जब प्रिंटिंग मशीन हमारे पास होंगी। तो उस पर कंटिन्यूसली काम चल रहा है, और जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से जो है वो टिंटिंग मशीन हम लोग इंस्टॉल करते रहेंगे। Okay. And also, like many paint companies have, introduced waterproofing as default product in the paint. So, what is your view on waterproofing product? देखिए, वाटरप्रूफिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसका सिनेरियो अगर आप समझें तो नॉर्मली वाटरप्रूफिंग की जो ज़रूरत ज़्यादा होती है वो जिस समय कंस्ट्रक्शन होती है। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में जितने सीमेंट या स्टील के डीलर होते हैं वो वाटरप्रूफिंग कंपाउंड्स रखते हैं, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन के टाइम में या जिस समय पेंटिंग होती है उस समय वाटरप्रूफिंग चाहिए।
तो कंपनी ने कुछ हमारा वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में लॉन्च किए हैं, और वो भी हम लोग उस लाइन में अभी धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। और हमारे काफ़ी ऑलमोस्ट 10% डीलर जो हैं, लगभग अभी 400 से 500 डीलर हमारे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स भी मार्केटिंग कर रहे हैं। Okay. And lastly, are you on track on achieving your stated revenue target of 450 crores by FY23 and 1000 crores by FY26? देखिए, इसके लिए तो वी आर ट्राइंग टू मेक ऑल अरेंजमेंट्स, और जो भी इसमें ज़रूरत होगी, जिस तरह से आउटसोर्सिंग मॉडल से या ओन मैन्युफैक्चरिंग से अभी इसमें काम चल रहा है। डीमर्जर के बाद इसमें पूरा डिकोडिंग हो पाएगी कि कितनी तेज़ी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे, और किस तरह से होपफुली हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं उनको अचीव करना है। और इसके लिए नए एरियाज़ में हम लोग डिपो प्लान कर रहे हैं खोलने के लिए, नए एरियाज़ में डीलर प्लान कर रहे हैं, और मटेरियल भी कहाँ से सोर्सिंग हम करेगा उसके ऊपर भी प्लानिंग चल रही है। तो होपफुली जो कंपनी का एक आउटलुक है वो कैसे अचीव करना है, और उसके लिए पूरा एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट हम लोग लेके चले हैं वो हम आने वाले टाइम में अचीव कर पाएंगे। Okay, very helpful. Thank you. Ma'am, does that answer your question? Yes, that answers my question. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Shri Spase from Money Life Insurance. Please go ahead. Hello, sir. Thanks a lot for taking my question. My question is regarding the scheme of amalgamation. So one of the entities being merged is a promoter entity called K2 Steel. So I went through website and information available publicly about K2 Steel. So what I found was that it is engaged in similar line of business, follows the similar franchisee-based models, and also kind of operates in similar geography. So my question is, so I have two questions. My first question is regarding why was this arrangement why did we have this kind of arrangement in the first place, where a promoter entity was engaged in competitive line of business? And secondly, after the amalgamation, will K2 be a separate brand that Kamdhenu will be maintaining, or will the network and franchises will be amalgamated and only one Kamdhenu brand will be used for steel? Thank you. इसमें ना दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो ट्रेड नेम है जो आप कंपनी देख रहे हैं, K2 Steel Limited. It's a promoter-owned company in which promoter shareholding is there. जो और कंपनियां हम लोग इसमें मर्ज कर रहे हैं उनमें से कंपनी K2 Steel है। इसके अंदर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। With regard to brand, that is separate, belong to others, not with this company. So इसके अंदर तो हम लोग ने जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि भाई इसमें जो मल्टीपल लेयर ऑफ शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का नहीं होना चाहिए, तो जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग करीब 30% प्रमोटर की जो और कंपनियां हैं, जो आप 7-8 कंपनियां देख रहे हैं, उनके अंदर थी। अब ये सारी की सारी कंपनियां मर्ज होने के बाद इसमें कामधेनु लिमिटेड में आएंगी और प्रमोटर्स के इंडिविजुअल नेम से सारी होल्डिंग हो जाएगी। तो जो आज 64.5% शेयर होल्डिंग है वो आप कंपनियों के नाम में नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल नामों से देखेंगे इसको। और इस मर्जर के लिए हम लोग इस काम को, जैसे अभी प्रेजेंटेशन में भी बताया था हमने, कि 16 दिसंबर को हमारी सेकंड मोशन अप्रूव हो गई है और 22 मार्च को हमारी फाइनल हियरिंग है एनसीएलटी में। ये अप्रूव होने के बाद में, और इवन ये इट वाज सपोज टू बी हेल्ड इन जनवरी, लेकिन एनसीएलटी के अंदर बहुत देर से डेट्स मिल रही हैं। इस वजह से ये 2-3 महीने का प्रोसेस हमारा आगे बढ़ रहा है, जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेके चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोएक्टिव होके जो हमारा प्लान है इनिशियली, तो जैसे इसको इफेक्चुएट करने के लिए पूरे प्रोसेस को ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हमने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने का इसी बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल अप्रूव किया है।
10 मार्च को ईजीएम भी हमने इसीलिए रखा है कि वो हियरिंग एक सेपरेट प्रोसेस से होता रहेगा, लेकिन उसमें जो हमारे पार्ट पे काम करना है उसको हम कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। K2 इसमें कोई बिजनेस नहीं है कंपनी के अंदर। Got it. Thank you, sir. So my second question is regarding we rely on franchisees, which are largely MSMEs and small enterprises, and we have been hearing that the unorganized sector and the small companies have taken a hit due to the COVID-19 pandemic. So I wanted to understand that are you seeing any kind of stress in the balance sheet or the businesses of your franchisees? And like would this kind of be a risk going forward for our company? देखिए, हमारा जो ये मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसके अंदर हमारा रिस्क फैक्टर टू द एक्सटेंट ऑफ रॉयल्टी अमाउंट है। इसमें ना तो कोई प्राइस फ्लक्चुएशन है, ना हमारा कोई और रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता है और हम लोग ये काम करते हैं कि फ्रेंचाइजी का बिजनेस बढ़े, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फ्रेंचाइजी को, अपनी सेल्स टीम को, मार्केटिंग टीम को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि सेल्स इंक्रीज हो। अगर सेल्स इंक्रीज होती है तो इसमें सबकी विन विन सिचुएशन में आते हैं और हमारा रॉयल्टी का पार्ट भी इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारे लिए अगर कोविड की वजह से उनका प्रोडक्शन लेवल कम हुआ है, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि एनजीटी में हमारे अपने प्लांट की भी प्रोडक्शन डाउन हुई थी, करीब 27 दिन तक वर्किंग हैम्पर रही है। एनसीआर के अंदर हमारे 4 फ्रेंचाइजी यूनिट हैं, उनकी प्रोडक्शन भी हैम्पर हुई। अगर उनकी प्रोडक्शन हैम्पर हुई तो मेरे को रॉयल्टी भी कम मिली है। टू दैट एक्सटेंट वी आर इम्पैक्टेड, अदरवाइज नॉट। Got it. Understood. Thanks. That would be all from my side. Thank you. The next question is from the line of Mukundan Rao from NDSM. Please go ahead. Hello, sir. It's a two-part question that I have. The first one is about, just now you talked about how the industry got impacted due to the NGT in the NCR region. So the first question that I have is, what kind of a contingency plan that we are going to have, because this is going to happen maybe in the coming future also. So what is the contingency plan that we have to take care of this issue, which should not affect our financials greatly? That's number one. Second question that I have is, we have talked enough about the paint business. I totally understand that concept. But what is the future for the steel industry going forward? The plans that if you can elaborate a little bit more, that will help. Thank you. I got your first question. आपने बताया जो इसके लिए कंटिजेंसी प्लान क्या है, ये हर साल हो सकता है। जो दिल्ली एनसीआर में कुछ मेजर्स इंडस्ट्री के लिए रहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो हर एक को मानना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही दिल्ली एनसीआर के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन हुआ था और एनजीटी के ऑर्डर से यहाँ एनसीआर के अंदर स्टील इंडस्ट्री को पार्शियल ऑपरेशन अलाउ किया गया था। 8 आवर्स में कुछ टाइम के लिए बंद किया गया था। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे ही हो सकता है। एज ए इंडस्ट्री, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसा आप कह रहे हैं ये सजेशन, अदरवाइज अपरेंटली लगता है कि इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन आपका मैं समझ नहीं पाया, आप क्या पूछना चाहते थे? If you can expand a little bit more on the future that you have on the steel division of the company, basically. स्टील बिजनेस के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एक ही प्लांट है जो दिल्ली एनसीआर के अंदर है। अदरवाइज हम लोग फ्रेंचाइजी रूट पे काम करते हैं जो हमारा मेन बिजनेस है। हम लोग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। जो हमारा अपना प्लांट है इसे हम मदर प्लांट की तरह यूज करते हैं। R&D का इसमें सारा काम होता है। फ्रेंचाइजी के अंदर हम हर यूनिट के ऊपर करीब 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं, एक ऑपरेशनल हेड और एक क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए। उनका ट्रेनिंग का काम भी हमारा इसी प्लांट में होता है और यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे हम दिल्ली एनसीआर के मार्केट को कैटर भी करते हैं। तो हमारा जो प्लान है स्टील के अंदर वो फ्रेंचाइजी रूट से ही आगे बढ़ने का है और जो कैपेसिटी हम लोग बढ़ाने वाले हैं स्टील के अंदर वो भी फ्रेंचाइजी रूट से बढ़ाने वाले हैं। तो इसके अंदर कोई कैपेक्स का प्लान नहीं है हमारा।
हम लोग फ्रेंचाइजी रूप से ही इसको इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज करने में जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट है हम पहले अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं, और इसके बाद में अगर उनकी कोई लिमिटेशन है फाइनेंशियल या स्पेस को लेके, तो फिर हम और नए लोगों को ये जोड़ रहे हैं अपने साथ में। इस लाइन के ऊपर हम लोग स्टील में काम कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Dinesh Kotecha from Chris. Please go ahead. सर नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे ये अवसर दिया गया है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आपको हिंदी ज़्यादा मतलब माफक आता है बात करने के लिए, मैं इसलिए मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ सर। सर 2-3 चीज़ें के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। एक तो अपना इंश्योरेंस क्लेम पूरा मिल गया है पैसा। सेकेंडली अपना पेंट का जो यूनिट जो डिवीजन है उसने अभी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गया, फ्रॉम द रेड इट इज कमिंग टू द प्रॉफिट्स। थर्डली सर मुझे एक जानना है कि आप अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है आयरन बार्स का, उसमें क्या पोजीशन है सर, कितना अपना मार्केट शेयर है और कितना अपना बढ़ सकता है मार्केट शेयर सर? पेंट के अंदर बात कर रहे हैं आप, स्टील की बात कर रहे हैं? स्टील इंडस्ट्री में है जो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स है स्टील इंडस्ट्री में, हाँ उसके लिए पूछ रहा हूँ सर। आप कामधेनु पास 10,000 की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, या कामधेनु नेक्स्ट की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट की कामधेनु नेक्स्ट को अब हमने पहले रीजनल लेवल पे कर रहे थे, हम रीजन टू रीजन इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे। अब इस प्रोडक्ट को हमने ऑल ओवर इंडिया रोल आउट कर दिया है। तो अभी जो सारे के सारे इंडिया में सिर्फ कामधेनु नेक्स्ट ही अवेलेबल होगा। जो हम दूसरा प्रोडक्ट बना रहे थे कामधेनु TNT, वो प्रोडक्ट अब हम नहीं बना रहे हैं, हम अपग्रेडेड वर्जन ही अब ऑल ओवर इंडिया में बना रहे हैं। ओके सर। सेकेंडली एक्सपेंड कर। हाँ सर मुझे एक दूसरा जानना है कि ये जो डीमर्जर का जो प्रोसेस था अपना पेंट इंडस्ट्री का, पेंट कंपनी का, वो कब तक मतलब हमें शेयर्स मिलेंगे, नया शेयर्स कभी मिलेगा सर? देखिए हम इसको एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि डीमर्जर प्रोसेस, हमने पहले प्रेजेंटेशन में भी बोला है, पास्ट हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बोला है कि विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर हम ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस। लेकिन अब NCLT का जो चल रहा है अभी सिस्टम, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा 2-3 महीने डिले लगता है कि ये जो अभी हियरिंग हमारी 22 मार्च को फिक्स हुई है, हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि जनवरी में हो जाएगी। तो अब ये मार्च में है 22 मार्च को, इसके बाद में ये ऑर्डर आएगा, फिर RD से अप्रूवल आएगा, देन लगता है कि Q1 के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। Q1 में लिस्टिंग होकर शेयर मिल जाएगा। सर दूसरा मुझे जानना है कि कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में अपना क्या एक्सपेंशन प्लान है सर? ये कंस्ट्रक्शन केमिकल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा फिर या तो डेकोरेटिव पेंट प्रीमियम सेगमेंट के जो प्रोडक्ट हैं, वाटरवेज इमल्सन, वहाँ फोकस कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक ये रहता है कि अगर हम एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे टू मैच द प्रोडक्ट लाइन अगर कंस्ट्रक्शन केमिकल की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा बहुत हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट पे है, वाटरवेज। एक लास्ट रिक्वेस्ट ऐसा है कि जो आप जो फाइनेंशियल फिगर्स देते हो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, उसमें कंसोलिडेटेड को एक साइड में रखो और स्टैंड अलोन को एक साइड पे रखो। आप स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड सब मिक्स कर रहे हो, तो एक स्टैंड अलोन का पूरा अलग दो और कंसोलिडेटेड का पूरा अलग दो, तो समझने में अच्छा रहता है सर, प्लीज। देखिए इसमें ऐसा है कि जो आज नंबर्स आप देख रहे हैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। ये एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से हमको ये करना पड़ता है। अगर नंबर्स को आप कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ 3-4 लाख रुपए की कैपिटल है जो इसमें इंक्रीज हुई है कंसोलिडेटेड में, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो फॉर्मेट है ये LODR में सेबी का प्रेस्क्राइब्ड है, इसमें मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं कॉलम को इधर से उधर लेके जा सकूं। सर मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन एक साथ में दीजिए, कंसोलिडेटेड अलग दीजिए, वो हो सकता है सर? हाँ वो हो सकता है, लेकिन अभी हमने इसलिए नहीं किया है कि जो नंबर्स है ना अभी सिर्फ स्टैंड अलोन का ही नंबर दिया हुआ है मेन, क्योंकि प्रेजेंटेशन में मेन स्टैंड अलोन का ही नंबर दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड के नंबर्स बहुत ज्यादा उसमें मतलब जोड़ने के बाद में सेम पोजीशन बनती है साहब। सर अभी मुझे एक चीज जानना है कि जनवरी फरवरी में आपका पेंट इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है अभी तक का? देखिए जनवरी तो इम्पैक्टेड रहा है बिकॉज ऑफ कोविड थर्ड वेव,
लेकिन अब जैसे जैसे ये कम हो रहा है तो मार्केट पिकअप हो रहे हैं. Right, sir. Thank you very much and wish you all the best, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Utkarsh Somaya, an individual investor. Please go ahead. Thank you for the opportunity. Sir, can you please tell me what's the peak revenue you can do in your paint business? Can you repeat your question, please? Little loudly. What is the peak revenue you can do in your paint business? In which situation you are asking? You are talking about our capacity, maximum capacity? No, in paints, what revenue can you do at 100% capacity? Yeah, that is 450 crore from our own plant and 150 crore from the outsourcing. Total 600 crore turnover we can achieve. So we can expect this to be achieved in FY22? No. It's a capacity. It cannot be treated as achievement of the sales because there is a line of productions. There are certain water-based, other are powder-based, other are solvent-based. So it will depend on the requirement of the market. So there is a demand in the market, there is a capacity in the plant. So we have to match them according to the requirement of the market. So given the requirement, how much revenue can we do in our paint business? Yeah, if that would be the remain same, 600 crore. If the demand come from the market as we have in the plant, so it will be 600 crore. Okay. And in your steel business in this quarter, how much is your own manufacturing and how much is outsourced in the franchising model? In the you are talking about Q3? Q3, yes, and 9 months more. Yeah, 9 months Q3, yes. I will give you the figure. In the 9 months, we have achieved 17.8 lakh metric ton from the franchisee route, and 67,000 from our own plant. This is for 9 months. For 3 months, from the franchisee route, it is 6.12 lakh metric ton and 24,000 from our own manufacturing. And what is the capacity of your own plant? Our own capacity is 1,20,000 metric ton per year. And is there And what is the EBITDA per ton you did in this quarter? EBITDA is 6.4%. The EBITDA per ton. Per ton cannot be calculated. You have to calculate the royalty on per ton basis. That is around 375 rupees per metric ton royalty, average royalty which we are charging from the franchisee unit. Sorry, can you repeat that? During the quarter Q3. 3.7 rupees per unit kg. Per metric ton. No. It's a 375 rupees per metric ton. Understood. 3.75 per kg. So this is standard. 3.75 will remain constant. It is not constant. It may be 370. It's the average of last 3 months, Q3. It may be 370, it may be 380, 390, depending on the collection. Okay, and 17.8 lakh tons you sold in 9 months, and you spoke about expanding via the franchisee route. So can you lay out your expansion plan for the next 2 years? Yeah, we are expanding from 30. Our present capacity, recent capacity is 38 lakh metric ton. And we are expanding 38 lakh to 50 lakh metric ton over a period of next 2 years through the franchisee route only. You are not going to do any capex for this? Yes. Capex on the partner producers? No. We are not incurring any capex in our own plant or in the franchisee. Capacity will be increased by the franchisee itself.
they will make the investment. Okay, 50. Okay, sir. Thank you so much. All right. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Atul Kothari from Progwell Securities. Please go ahead. सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरे थोड़े प्रश्न है पेंट बिजनेस को लेके। सर उसमें खास करके सर अभी हमने मेरे ख्याल से प्रीति जिंटा को साइन किया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो सर उनको लेके हमने कुछ मार्केटिंग प्रोग्राम किए हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो। हाँ, ये हम पेंट प्रोडक्ट में हमने उनको रखा है अभी एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट के अंदर अभी जैसे हमारा प्रमोशनल मटेरियल जो भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें हम प्रीति जिंटा के फोटो को, प्रीति जिंटा को लेके प्रमोट कर रहे हैं। उनके टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे प्रमोशंस भी हमारे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो मार्केट में हम लोग उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में। अभी आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, रिजल्ट जैसे हमारे कल आए थे, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, ऑल इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑल एडिशंस। तो इसके अंदर भी हमने प्रीति जिंटा का एक हाफ पेज का एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है। ठीक है सर। और सर जो पेंट सेगमेंट है सर, उसमें क्या हमने कहाँ भी मार्केट शेयर गेन किया है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में विद इन द पेंट सेगमेंट? हाँ, इसमें हमारा नॉर्थ में इंक्रीज हो रहा है, साउथ में थोड़ा कम है, तो उधर हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि हमारा अभी दूसरा क्या है कि अभी हमारे प्लांट में फायर इंसिडेंट होने के बाद में हमारी डिपेंडेंसी जो आउटसोर्स में थी इवन ऑन द प्रीमियम प्रोडक्ट, वो अपना प्लांट चालू होने के बाद में हमारी डिपेंडेंसी वहाँ कम हो रही है। और हम लोग जो बाहर बना रहे थे प्रोडक्ट, वो अब अपने प्लांट में स्टार्ट कर दिया है हम लोग ने। तो प्रीमियम प्रोडक्ट को हम बढ़ा रहे हैं, नॉर्थ में हमारा ज़्यादा होल्ड है। ओके, लेकिन सर पेंट सेगमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट है जहां हमने मार्केट शेयर गेन किया है? वो प्रीमियम इमल्शंस के अंदर ही कर रहे हैं। और एक जो कलरेंट होते हैं, एक कलरेंट एंड एक और जो ट्यूब्स में आता है, व्हाट यू कॉल, कलरेंट होते हैं ना जैसे डिफरेंट टाइप के, वहाँ पे भी हम लोग स्टेनर एंड कलरेंट में भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है। एंड सर Q3 FY22 यानी ये जो गया जो क्वार्टर था, उसमें हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस क्या था पेंट बिजनेस में? पेंट बिजनेस का एवरेज सेलिंग प्राइस अराउंड 120 देखना पड़ेगा मुझे। देखिए इसके अंदर जो रहता है एक्चुअल सेलिंग, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो इसमें करीब 123 रुपये हमारा पर लीटर रहा है। और अगर आउटसोर्सिंग की बात करें कि आउटसोर्सिंग का है वो 55 रुपीज, क्योंकि हम आउटसोर्सिंग जो है लो वैल्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट अपने यहाँ बना रहे हैं। तो अपना जो बना रहे हैं उसका 23 रुपये है और जो आउटसोर्सिंग है उसका 55 रुपीज पर लीटर। सर ये कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस बता रहे हैं आप? सेलिंग प्राइस बता रहे हैं आपको, ASP, एवरेज रियलाइजेशन प्राइस पर लीटर। ओके सर। और सर आपने जैसे जिक्र किया आउटसोर्सिंग और जो खुद का, और प्लस आपने ये भी बताया कि अभी हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खुद इन हाउस बनाना चालू कर दिए है। तो सर आप मुझे ये प्रोपोर्शन बताएंगे कि आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का क्या रेशियो है? अभी इस टाइम पे तो 60-40 का रेशियो चल रहा है। ओके सर, ओके। और मोस्टली जो भी आउटसोर्सिंग हो रहा है वो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हो रहे हैं? हाँ जी। ओके। और सर दोनों में मार्जिन डिफरेंशियल कितना है? मार्जिन में थोड़ा, आउटसोर्सिंग में तो मार्जिन दूसरे को थोड़ा देना ही पड़ेगा अपने को, बराबर है, लेकिन वो कंपनसेट हो जाता है। जो लो वैल्यू प्रोडक्ट है उसके फ्रेट एलिमेंट से वो कंपनसेट हो जाता है कि उसको प्रॉफिट भी मिलता है और मेरे ऊपर लोड भी नहीं आता। जैसे मेरे को यहाँ से अगर मटेरियल उदयपुर भेजना है तो उदयपुर के अंदर में अपने प्लांट में बनाने के बाद में उसे भेजता हूँ तो फ्रेट बहुत लगता है मेरा लो वैल्यू प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हाई वैल्यू भेजूंगा तो भी वही फ्रेट है, लो वैल्यू भेजता हूँ वो भी फ्रेट है। तो अगर वो फ्रेट एलिमेंट मेरा मार्जिन में चला जाता है तो मेरे पे अल्टीमेटली कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है। तो सर अभी डिफरेंशियल क्या रहेगा सर
यानी इन हाउस और जो मैं आउटसोर्स करता हूँ उसमें दोनों में मार्जिन में डिफरेंस आप बता रहे कुछ ज्यादा नहीं होगा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग सर? नहीं 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 नहीं, अपना ऑन मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन ज्यादा रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि मैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और जो बाहर बनवा रहा हूँ मैं वो बनवा रहा हूँ लो वैल्यू प्रोडक्ट। लो वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर अगर मेरे से सामने वाला मार्जिन ले रहा है तो उस मार्जिन से मैं इंपैक्टेड बहुत ज्यादा नहीं होऊंगा, क्योंकि उसमें जो मार्जिन, सपोज उसके ऊपर वो 5 रुपए मार्जिन ले रहा है मेरे से 1 लीटर के ऊपर, तो वो 5 रुपए में से मेरे को 2 रुपए का ही इंपैक्ट आएगा, 3 रुपए में फ्रेट में सेव कर रहा हूँ अपने। ओके, आर यू गॉट माय पॉइंट? यस आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। एंड सर अपना पेंट बिजनेस में व्हाट आर डेट लेवल्स? इसके अंदर वर्किंग कैपिटल ही है मेनली अराउंड 40 करोड़, और करीब 12 करोड़ का हमारे ऊपर इसमें कोविड के टाइम पे हम लोग ने वर्किंग कैपिटल टर्म लोन लिया था। ओके, और सर जैसे आपने अभी बताया कि हमने जो अपना जो पेंट फैसिलिटी था उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और जो अक्टूबर से मेरे ख्याल से हमने चालू किया वापस काम, तो सर इस फैसिलिटी का सर फुल ईयर व्हाट इज द पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर द फुल ईयर? फुल ईयर सारे प्रोडक्ट का अगर हम करते हैं और मार्केट में डिमांड है, सारा बेच पाते हैं, तो 450 करोड़ की टर्नओवर यहाँ पे जनरेट हो सकती है इस प्लांट से। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इस प्लांट की 450 करोड़ है। ओके सर, ओके सर, दैट्स इट सर, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। Thank you very much. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, I would now like to hand the conference back to the management for closing comments. Oh. I take this opportunity to thank you everyone for joining on this call. I hope we have been able to address all your queries. For any further information, kindly get in touch with me or SG, our investor relation advisor. Thank you once again. Thank you. On behalf of Kamdhenu Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining. You may now disconnect your lines.